बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्ट स्मार्टा की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल जो पेपर हो चुका है EST इस्लामियात का FDE में, तो 29/9/2024 को, तो उसका आज आखिरी पार्ट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 से लेके 100 तक। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, which of the following soapy orders emphasizes the importance of love and devotion to Allah? Love and devotion to Allah. तो that is चिश्ती, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 71 देखिए, who is the author of the influential economic theological टेक्स्ट अल-मवाक़ात। तो इसके अतर का नाम जो है ऑप्शन अल-शिब्ती, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 72 नंबर देखिए, व्हाट इज द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द साइकिल ऑफ प्रोपेसी। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दिस इज नबुआ, ऑप्शन बी है। 73 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक स्कॉलर इज नोन फॉर द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस अल शापी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74, व्हाट इज द टर्म फॉर द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान, हिफज करना, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75, who among the following Islamic scholars developed the theory of acquired knowledge? Acquired knowledge, Al-Ghazali, ऑप्शन ए है। 76 नंबर देखिए, what is the Islamic concept of the 7 internal organs mentioned in the Holy Quran? Nafas, Al-Nafas, ऑप्शन डी करेक्ट है। 77, which of the following soapy orders emphasizes the importance of spiritual retreat? नक्शबंदी, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 78, who is the author of the influential Islamic philosophical text Al-Futuhat Al-Mahiyat? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इब्नी अरबी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79, व्हाट इज द टर्म फॉर द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द राइटली गाइडेड खलीफा अल खुलफा अल राशिदीन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 80 नंबर, which of the following Islamic scholars is known for his work on the principle of Islamic economic? Khaldun, Ibn Khaldun, option A is the correct option. 81, what is the Islamic concept of the night journey? Al-Isra, option A correct है। 82 देखिए, what is the term for the Islamic concept of the infallibility of prophets? Infallibility of prophet, Isma, option A is the correct option. और क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83, who among the following Islamic scholars developed the theory of the 4 sources of Sharia? The 4 sources of Sharia, he was Al-Shafi.
क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों, व्हाट इज द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस ऑफ द एंड ऑफ टाइम अल आयात। 85 number, which of the following Sufi order emphasizes the importance of spiritual love and intimacy with Allah? So that is Chishti, option C correct है। 86, who is the author of the influential Islamic theological text Al-Iqtisad fi Al-Itiqad? तो इसमें अल-ग़ज़ाली, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, what is the term for the Islamic concept of the preservation of faith? Preservation of faith, Hifz al-Iman, option A correct है। 88, which of the following Islamic scholar is known for the work on the principle of Islamic governance? Islamic governance, al-Mawardi, al-Mawardi, option D है। 89, what is the Islamic concept of the intercession on the day of judgment? In the day of judgment, al-Wasila, option B। 90 number, who among the following Islamic philosophers developed the theory of the eternity of the universe? Eternity of the universe, तो ये होता इब्न रुश्द, ऑप्शन डी इसमें। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए 91, which Islamic theological school emphasize the rule of reason in understanding divine commands? Divine command, option B, Mu'tazilism, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, who among the following Islamic philosophers argued for the eternity of the universe? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, इब्न रुश्द। और 93 नंबर, what is the term for the principles of analogical reasoning in Islamic jurisprudence? Jurisprudence, तो that is qiyas, ऑप्शन ए। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हनफी jurisprudence, what is the status of a marriage contract concluded without the presence of witness? गवाह के बगैर invalid, ऑप्शन बी। 95, which Umayyad caliph initiated the conquest of Spain? Al-Walid I, option D is the correct option. Question number 96 देखिए 96 number, what is the name of the Abbasid caliph who commissioned the translation of Greek philosophical work into Arabic? Al-Mamun, option बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान थ्रू द कुरान इटसेल्फ? तफसीर, ऑप्शन ए। 98 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच सूरह इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ द कुरान? सूरह फातिहा, ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99, what is the term for the hadith narrated by a single reliable narrator throughout the chain of transmission? That is gharib, option D। आखिरी क्वेश्चन देखिए, who is considered the compiler of the most authentic collection of hadith? So that is Bukhari, option A।
तो इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला कोशिश करता हूं कि पूरे पेपर को MS Word में लिखकर अपलोड करूं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।